Minister cannot say this कि सीधा सीधा बोलो. How can he say that सीधा सीधा? मैं अगर टेढ़ा बोल रहा हूं, क्या टेढ़ा बोल रहा हूं बताइए. अगर सीधा सीधा बोलना है तो अपने पार्टी के लोगों को बोल लो. तुम्हारे हम जो है सीधी उल्टी बात सुनने के नहीं है. कब होगा? तो आई रिक्वेस्ट ए वन टाइम सेटलमेंट करिए, एक ही वक्त में दे दीजिए. अरे हम सेकंड रिचेस्ट स्टेट है ना भाई. सर, आर वी नॉट द सेकंड रिचेस्ट स्टेट एज पर द बजट एस्टिमेट्स एंड द बजट प्रेजेंटेड? एंड इट इज अ सरप्लस स्टेट. सरप्लस स्टेट में पैसा रहने के बाद क्यों तरसा रहे हो किसानों को? क्यों तड़पा रहे हो किसानों को? यह सवाल दे दीजिए उनको. सर, more than the failure of monsoon, sir, resulting in drought condition in large part of the state, I feel the government has failed to inspire confidence among the farmers about its sincerity to tackle the problem affecting the farm sector. The recurring suicide are a grim reminder that half-hearted measures would not help to tackle these crises, sir. So the TRS has promised to loan waiver, sir. यही है. पहले तो हम बोलना नहीं चाहते, बोले तो सुनना नहीं चाहते और हंसना चाहते हैं लोग. वहां किसान मर रहा है, अफसोस यहां लोग बैठ के हंस रहे हैं. मीडिया आज बहुत ताकतवर हो चुका है. प्लीज डू नॉट टेक मीडिया फॉर ग्रांटेड. All the people are laughing when I'm speaking. I would like to remind you that you are being voted. I have come to power because of the farmers. Because of the farmers. Please. और आज आप you are laughing at the farmers. किसानों पे हंस. Please silence. స్పీకర్ సార్ Please. గౌరవ సభ్యులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు చెప్పిందంతా కూడా గౌరవ మంత్రివర్యులు మా పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రివర్యులు అన్ని అంశాలు కూడా చాలా క్షుణ్ణంగా నోట్ చేసుకుంటా ఉన్నారు. సార్, ఇఫ్ హీ వాంట్స్ టు ప్లే టు ద గ్యాలరీ, ఇఫ్ హీ వాంట్స్ టు ప్లీజ్ పీపుల్, ఇఫ్ హీ వాంట్స్ టు ప్లీజ్ మీడియా, ఈజ్ వెల్కమ్ సార్. ఈజ్ అ లెర్నెడ్ మ్యాన్, a senior legislator. If he only wants to play to the gallery and if he only wants to create a statement, he wants to make a statement, he is more than welcome, sir. He has every right like any other member. But to say that the government is not serious, to say that some legislators are laughing, and to say that somebody is monitoring us, sir, we are senior legislators here. We are in a responsible position running the government, sir. We are far more serious, and therefore in the statement that was given in the morning, my learned friend should know, the government has not only come forward with a positive intent to give retrospective coverage to every single suicide that has happened since June 2, 2014. We've also clearly said in our statement, sir, చాలా స్పష్టంగా వారికి చెప్పాం, ఒకటేసారి రుణమాఫీ చేయడానికి కూడా సానుభూతితో పరిశీలిస్తామని చెప్పిన తర్వాత దానికి ఇన్ని రకాలుగా, సార్, వారికి ఏమైనా చెప్పదలుచుకుంటే ఆయన పెద్ద గొంతేసుకుని మాట్లాడినంత మాత్రాన అదేదో గొప్ప విషయం అన్నట్టు విషయం స్ట్రైట్ గా కూడా చెప్పొచ్చు సార్. ये सब की जरूरत नहीं है. आप अगर कुछ पॉइंट बनाना चाहते हो, बोलना चाहते हो, सीधा सीधा बोलो. सर, you have the same right. Mr. Owaisi, you have the same right as every other member. You do not enjoy special privileges here. You please make note of that. आप सुबह मुद्दा उठाए, हम जवाब भी दिए सरकार की तरफ से. अभी भी हम यही चाहते हैं. Please do not play to the gallery. Please make a. Please silence. मैं सीधी बात बोल रहा हूं ओवैसी साहब, अगर आप इज्जत देंगे तो जरूर इज्जत वापस मिलेगा. अब अगर गैर जिम्मेदारी अगर आप एक्यूजेशन लगाएंगे, सरकार बिल्कुल चुप नहीं बैठेगी. गैर जिम्मेदारी एक्यूजेशन की कोई जरूरत नहीं है. आप जो पॉइंट कहना चाहते हैं सीधा कहिए. आप जो पॉइंट कहना चाहते हैं सीधा कहिए, सरकार रिस्पॉन्ड करेगी. खाली पीली गैर जिम्मेदारी बातें करने की क्या जरूरत है? यहाँ पे हम लोग बहुत सीरियस है, इसलिए यहाँ बैठते हैं. इफ ही वांट्स टू प्ले टू द गैलरी, लेट हिम, सर. वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम. When all the other leaders were speaking, the government never intervened. And again they say that I am repeating what has been said. अफसोस तो यही है ना साहब, इतने सब लोग बोल रहे हैं मगर कान पे इनके जूं तक नहीं रेंगती. यही है साहब कि we all are saying, and I have a strong objection to this. What does the honorable minister means? कि सीधा सीधा बोलिए. मैं टेढ़ा बोल रहा हूं. सीधे का मतलब क्या है? सर, honorable speaker, sir, you are on the chair, you are the speaker, you are the custodian of this house. Minister cannot say this कि सीधा सीधा बोलो. How can he say that सीधा सीधा? मैं अगर टेढ़ा बोल रहा हूं, क्या टेढ़ा बोल रहा हूं बताइए.
अगर सीधा सीधा बोलना है तो अपने पार्टी के लोगों को बोल लो। तुम्हारे हम जो है सो सीधी उल्टी बात सुनने के नहीं है। आप अपना बोल लो अपने पार्टी के लोगों को। और मैं ये पूछना चाहता हूं, Stay silent. क्या मतलब है सीधा सीधा? सर, आई हैव द राइट टू पुट अक्रॉस, सर।